Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 38th lecture of this series of CPC. So in this lecture we would start with Order 7 Rule 10, written of plaint. So read it. Subject to the provisions of Rule 10A, the plaint shall at any stage of the suit be written to be presented to the court in which the suit should have been instituted. So they are clearly saying that at any stage of the proceedings, a plaint shall be returned, that is, the plaint may be returned for a presentation in a proper court. That means what? Means the court in which the suit has been filed, that is not having the jurisdiction to hear the suit, and therefore the court may return the plaint through the party to present it in a proper court. तो फिर से पढ़ो. Subject to the provisions of Rule 10A, the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted. Explanation देखो. For the removal of doubts, it is hereby declared that a court of appeal or revision may direct, after setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaint under this sub-rule. Then Rule 2. On returning of a plaint, the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reasons for returning it. Now basically the situation is like this. Suppose a suit plaint is filed on this date and WS is filed on this date. When WS there is a preliminary objection. Now it can be in WS or it can be thereafter also by amendment of pleadings. But there is a preliminary objection in the written statement, or maybe after the filing of the written statement. By amendment of pleadings the objection has been raised. Upon that objection, the court will frame a preliminary issue. Court एक issue बनाएगा, because that is an objection on jurisdiction. The court will frame a preliminary issue, and thereafter the court will conduct a hearing on that preliminary issue. And somewhere here, the court decides that it does not have jurisdiction. अब इस decision के बाद the court will pass an order of return. So I am again repeating it. Whenever a suit is filed, then in the written statement or thereafter, through amendment of pleadings, the defendant may raise the question of jurisdiction. That is, this court does not have the jurisdiction. Thereupon the court will frame a preliminary issue as to whether this court will have jurisdiction, does not have jurisdiction, and the burden of proof will be upon the defendant that this court does not have the jurisdiction. उसके बाद the hearing will be done on that point, and after that the court will come to the conclusion that actually it does not have the jurisdiction. Then it will pass the order of what? Order of return. Order of return of plaint. अब एक बार जब कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ रिटर्न पास कर दिया तो उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो. एंड ऑर्डर 43 रूल 1A says that declares that the order of return is a appealable order. Order 43 rule 1A declares that the return order is a appealable. तो इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो. बट सपोज आप अपील में नहीं गए या अपील में गए भी लेकिन अपीलेट कोर्ट ने मना कर दिया, then in that case what is the meaning of the order of return? Then the court in the back of the plaint or front of the plaint endorse that this plaint was presented in this court on so and so date by so and so party, and the plaint is being returned for a presentation to a proper court for so and so reasons. और कोर्ट अपना रीजंस लिखेगा कि क्यों उसने रिटर्न किया, and that can be a separate order sheet. The court will write the reasons of return as to why this court does not have jurisdiction, and it will also write that who presented the plaint and when he presented the plaint. अब उसके बाद the copy of the plaint will be handed over to the
plaintiff. If the plaintiff now choose the proper court, और ये कोर्ट नहीं बताएगा प्लेंटिफ को कि कौन सा प्रॉपर कोर्ट है, कोर्ट रिटर्न कर देगा, फिर प्लेंटिफ अपने लॉयर से कंसल्ट करेगा कौन सा प्रॉपर कोर्ट है, एंड ही विल फाइंड आउट. अब ऑफ रिकॉर्ड फॉर्मली कोर्ट कैन टेल हिम कि उस कोर्ट में जाओ, बट कोर्ट इज नॉट ड्यूटी बाउंड, कोर्ट इज नॉट लॉ बाउंड टू टेल द प्रॉपर कोर्ट. सो द प्लेंटिफ वुड कंसल्ट द लॉयर एंड फाइंड द प्रॉपर कोर्ट. और आपको दोबारा कोर्ट फीस वगैरह नहीं लगाना, आप उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा प्रेजेंट करोगे इन द प्रॉपर कोर्ट. अब जिस दूसरी कोर्ट में किया उसका भी अगर ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो वहाँ पे भी यही होगा, दोबारा रिटर्न ऑर्डर होगा, फिर आप दूसरी कोर्ट में जाइए. सो दैट विल गो ऑन अनलेस द प्लेंट विल बी प्रेजेंटेड इन द प्रॉपर कोर्ट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिटर्न ऑर्डर. So return is done on the ground of lack of jurisdiction. It can be lack of subject matter jurisdiction, it can be lack of territorial jurisdiction, it can be lack of pecuniary jurisdiction. तो इनमें से अगर कोई भी एक jurisdiction नहीं है कोर्ट के पास, then the court may pass an order of return. Normally return order हमेशा opposite party के objection पर होता है. When the opposite party objects, unless the opposite party objects, the court will not go into the hearing on return, but the court always has the power of suo motu also for the order of return. जैसे मान लो कोई इंसॉल्वेंसी कोर्ट है, आप उसके पास फैमिली डिस्प्यूट लेके चले गए, then obviously he will return the plaint. वहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन ना भी हो फिर भी द कोर्ट विल रिटर्न द प्लेंट. तो खास करके जब सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन ना हो तो वहाँ पर द कोर्ट सुओ मोटो आल्सो कैन रिटर्न द प्लेंट. नॉर्मली दे एक्सपेक्ट एन एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड. अब किसी फैमिली कोर्ट में पहुँच जाओ आप सिविल सूट लेकर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लेकर, तो ऑब्वियसली कोर्ट पार्टी ऑब्जेक्ट करे या ना करे, the family court knows that it is not mine jurisdiction and therefore it will return the plaint per se, even without objection. I am reading it again. Subject to the provisions of Rule 10A, the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted. So they are saying the purpose, they are declaring the purpose, while the plaint is returned to be presented to the proper court which has jurisdiction, and therefore it is implicit that the ground of the return will be the lack of jurisdiction of the court. Subject to the provisions of Rule 10A, the plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted. For the removal of doubts, it is hereby declared that a court of appeal or revision may direct, after setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaint under this sub-rule. अभी एक्सप्लेनेशन के सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है. दिस इज टॉकिंग अबाउट, सपोज एक ट्रायल हुआ, ट्रायल में आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, द डिफेंडेंट रेज द ऑब्जेक्शन of the lack of jurisdiction at or before the settlement of issue, but the court held that it has jurisdiction and the court went on to trial and the court passed a decree. अब decree के खिलाफ the defendant goes in appeal. अब in appeal under section 21 read with 99, in appeal under section 21 read with 99, this defendant raises the ground that I had raised the ground of lack of jurisdiction at and before the settlement of issues, and due to lack of jurisdiction I had suffered a failure of justice.
due to lack of jurisdiction I have suffered a failure of justice, and the appellate court will conduct a hearing on that point, and if it is satisfied, then it will set aside the decree. और decree set aside करने के बाद it will direct that the plaint will be taken into a proper court. Plaint will be taken to a proper court. So appellate court भी written order पास कर सकता है अगर ट्रायल कोर्ट का jurisdiction नहीं होगा तो, provided सेक्शन 21 का कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक, फिर से बता रहा हूँ, सूट फाइल हुआ ट्रायल कोर्ट में, जब डिफेंडेंट ने सेटलमेंट ऑफ इशूज या उसके पहले लैक ऑफ जुरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन रेज किया, जब द कोर्ट डिड नॉट हियर दैट, डिफेंडेंट ने लैक ऑफ जुरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन रेज किया बट कोर्ट डिड नॉट हियर दैट, कोर्ट heard but did not return the plaint. Then thereafter the decree is passed. Then after the decree the defendant goes into the appeal, and before the appellate court he raises the ground that the trial court did not have jurisdiction. The trial court did not have the jurisdiction, and because of the lack of jurisdiction I have suffered the failure of justice. And if that is proved, then the appellate court will set aside the decree, and the appellate court itself will pass the order of return, but he has to fulfill the section 21 paid with 99. 21 आप याद करो, वहाँ पे वो लिख रहे हैं revisional court या appellate court. So read it again. For the removal of doubts, it is hereby declared that a court of appeal or revision may direct, after setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaint under this sub-rule. So when the court of appeal decides that the trial court does not have jurisdiction, तो कोर्ट ऑफ अपील अगर चाहे तो उस ऑर्डर के साथ पार्टी को नीचे ट्रायल कोर्ट के पास भेज दे और ट्रायल कोर्ट रिटर्न करेगा, या फिर कोर्ट ऑफ अपील खुद ही रिटर्न ऑर्डर पास करके प्लेंट को वापस कर देगी, खुद ही रिटर्न ऑर्डर पास करके प्लेंटिफ को वापस कर देगी, that you go and present it into the proper court. Is that clear to us? और जब भी रिटर्न ऑर्डर होगा तो उसी प्लेंट पर लिखा जाएगा, जब भी रिटर्न ऑर्डर होगा, सपोज दिस इज अ प्लेंट, तो इसी प्लेंट पर लिखा जाएगा, और अगर लंबा ऑर्डर है तो सेपरेट ऑर्डर सीट हो सकती है, तो इसी पे लिखा जाएगा कि एज टू हु प्रेजेंटेड द प्लेंट, प्लेंटिफ का नाम, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, किस डेट पर प्रेजेंट किया गया था प्लेंट, और डेट ऑफ रिटर्न, किस डेट पर रिटर्न हो रहा है, एंड द ग्राउंड्स ऑफ रिटर्न. So written order always have to be a speaking order. A speaking order means it must contain the grounds of return. It must contain the grounds of the return. ठीक, तो ये सेपरेट सीट में भी हो सकता है या फिर प्लेंट के पीछे लिख दें. ठीक. Now I believe that you understood what is meant by written order. अब देखो यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकते हैं. तो जब रिटर्न हो गया है प्लेंट हैज बीन रिटर्न, so it will be handed over to the plaintiff, and plaintiff has to go to the proper court. plaintiff खुद proper court में जाएगा और वहाँ पर जाकर plaint को present करेगा. So that is one possibility. And the other possibility is that the plaintiff may apply in the same court. जिस कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर पास किया है, प्लेंटिफ उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालेगा that I want to take this plaint into so and so court. प्लेंटिफ अपने विजडम पे ही decides in which court he takes the matter to, and he applies before the same court which passed the return order that I want to take the plaint to so and so court. Please fix the date of appearance before that court. अब मान लो कोर्ट ए ने रिटर्न ऑर्डर पास किया, इट इज माई केस, आई डिसाइडेड टू टेक इन टू द कोर्ट बी. अब आई कैन डू टू थिंग्स. वन, आई कैन टेक द प्लेंट एंड डायरेक्टली go to the court B and file it, or may I make an application in the court A
that please fix a date of appearance in court B. I file an application in court A to fix a date to appear and present the plaint in court B and serve a notice to the defendant. अब अगर कोर्ट ने डेट फिक्स कर दिया और नोटिस दे दिया डिफेंडेंट को, नोटिस दे दिया मुझे और डिफेंडेंट को, तो मुझे वहाँ दोबारा प्लेंट वहाँ प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेंट वहाँ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो डेट फिक्स किया था उस डेट पर मी एज ए डिफेंडेंट आर बाउंड टू अपीयर। और इन दिस प्रोसेस व्हाट happens is I will get some time, because otherwise I will go to the court, there the plaint will be presented, then thereafter court number वगैरह पता पड़ेगा, then I appear, then after that the office objection and all that will take place, then again summons will be issued from there. summons के बाद defendants को summons मिलेगा, then the defendant will make the appearance on the first date of hearing. तो वो जो 2-3 महीने का टाइम है वो लगेगा वहाँ पर दोबारा से। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट अगर अपीयरेंस फिक्स करवा दिया, देन आई विल सेव द एंटायर टाइम, आई विल बी सेविंग दैट एंटायर टाइम, एंड ऑन द डेट ऑफ अपीयरेंस मी एंड डिफेंडेंट बोथ आर बाउंड टू अपीयर in that court, and this is provided in where रूल 10A। ठीक, तो एक ऑप्शन तो है कि आप खुद प्लेंट ले लो रिटर्न होने के बाद एंडोर्समेंट के साथ और खुद जाकर फाइल करो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप कोर्ट को एप्लीकेशन डालो कि इन सो एंड सो कोर्ट आप डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर दो एंड यू गिव मी द नोटिस टू मी एंड द डिफेंडेंट। So thereupon the court will fix the date and serve a notice, and this notice will be deemed to be a summons by the other court। तो दूसरे कोर्ट को मुझे दोबारा सम्मन्स, दूसरे कोर्ट के थ्रू मुझे दोबारा सम्मन्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। This notice itself will be considered to be a summons by the other court। ठीक, लेकिन this second situation will happen only when the defendant had made appearance in this court। मतलब फर्स्ट सूट में जो फर्स्ट हियरिंग में डिफेंडेंट अपीयर हुआ तभी होगा। अगर डिफेंडेंट कभी आया ही नहीं है उस सूट में और फिर भी रिटर्न ऑर्डर हुआ है तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज अनलेस द डिफेंडेंट appears before the court, unless the defendant making the appearance before the present court, we cannot go for the second situation, because इसमें लिखा है clearly 10A में if the defendant appeared before the court। So take out 10A, read it। where in any suit after the defendant has appeared, the court is of opinion that the plaint should be returned, it shall before doing so intimates its decision to the plaintiff। तो डिफेंडेंट को पता हुआ about the order, because the defendant has already appeared in the court and the court decide the return of plaint, then it will give notice that of to the plaintiff। And where an intimation is given to the plaintiff under sub rule 1, the plaintiff may make an application to the court, number A, specifying the court in which he proposes to present the plaint after its return। So that is the application I was talking about। So he will tell the court that I want to take my plaint to so and so court, and second, praying that the court may fix a date for the appearance of the parties in the said court। तो आप इस कोर्ट से प्रेयर करोगे किसी और कोर्ट का नाम बताकर कि उस कोर्ट में हमारे अपीयरेंस के लिए आप डेट फिक्स कर दो, रिक्वेस्टिंग दैट द नोटिस ऑफ द डेट सो फिक्स्ड मे बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट। अब ये जो नोटिस है
the present court will fix a date in the other court and it will serve a notice to me and the defendant. And this notice will be deemed as if it was a summons passed by the other court. And therefore me and the defendant both are bound to appear before the other court. अब ये भी ध्यान रखना आप कि जिस दूसरी कोर्ट में जो डेट फिक्स किया है इस वाली कोर्ट ने, तो वो दूसरी कोर्ट बी इज नॉट बाउंड बाय दैट डेट, क्योंकि उसका भी अपना वर्कलोड होगा। तो कोर्ट ए ने जो डेट फिक्स किया तो उस डेट को दोनों पार्टी अपीयर्स जरूर होंगी कोर्ट बी में। Now it is not necessary that court B will conduct hearing on that date. That court may fix another date also. But जो डेट इस कोर्ट ए ने डाला है on that date, the parties must have to appear in court B. So where an intimation is given to the plaintiff, under sub-rule 1, the plaintiff may make an application to the court specifying the court in which he proposes to present the plaint after its return, praying that the court may fix a date for appearance of the parties in the said court, and requesting that the notice of the date so fixed may be given to him and to the defendant. Where an application is made by the plaintiff under sub-rule 2, the court shall, before returning the plaint and notwithstanding that the order for return of plaint was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit, fix a date for the appearance of the parties in the court in which the plaint is proposed to be presented, and give to the plaintiff and to the defendant notice of such date for appearance. अब इस कोर्ट के पास jurisdiction तो नहीं था ट्राई करने का, फिर भी फिक्सेशन ऑफ डेट का पावर है. It will fix a date and serve a notice to the parties to make an appearance in other court. Where the notice of the date for appearance is given under sub-rule 3, it shall not be necessary for the court in which the plaint is presented after its return to serve the defendant with a summons for appearance in the suit, unless that court, for reasons to be recorded, otherwise directs. अब उस कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो डेट चेंज कर दे और चेंज डेट का सम्मन्स इशू कर दे, बट अगर उसने डेट चेंज नहीं किया then you have to appear on that date, and that other court is not bound to serve the summons to the defendant, because notice itself will be considered to be a sufficient summons to the party. The said notice shall be deemed to be a summons for the appearance of the defendant in the court in which the plaint is presented on the date so fixed by the court by which the plaint was returned. ठीक, तो वही कह रहे हैं the said notice would be considered as summons. Now where the application made by the plaintiff under sub-rule 2 is allowed by the court, the plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint. What it means? मान लो इस डेट पर कोर्ट ने आपका यहाँ पर रिटर्न ऑर्डर पास कर दिया. Listen it carefully, it is important. The trial court had issued the written order on this date. अब after the written order, the plaintiff has certain options. एक ऑप्शन तो है कि he takes his plaint, अपना plaint ले ले और he present himself to the other court. और दूसरा ऑप्शन ये है उसके पास कि उसी कोर्ट में वो एप्लीकेशन डाल दे 10A में और डेट फिक्स करवा ले दूसरे कोर्ट में. दैट इज द सेकंड ऑप्शन. और थर्ड ऑप्शन ही हैड इज रिटन ऑर्डर के खिलाफ ही विल मेक एन अपील. ही मेक एन अपील अंडर ऑर्डर 43 रूल 1A.
So there are three options he has got. So he has got three options. One, he take the plaint and present himself to the other court. Second, he make an application in the same court and fixes the date. And third, he can make an appeal. ठीक. अब what this last clause is saying is कि अगर आपने 10A वाला एप्लीकेशन डाला और कोर्ट ने एप्लीकेशन पर सुनवाई करके डेट फिक्स कर दिया है किसी और कोर्ट में, तो इज इट नॉट दैट यू आर एक्सेप्टिंग द रिटर्न? आप रिटर्न को एक्सेप्ट कर रहे हो तभी तो किसी और कोर्ट में डेट फिक्स करवा रहे हो. यू आर नॉट अपोजिंग, यू आर एक्सेप्टिंग द रिटर्न ऑर्डर. और आपने रिटर्न ऑर्डर को मान लिया तभी आप किसी और कोर्ट में डेट फिक्स करवा रहे हो. अब वंस यू आर एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑर्डर, so thereafter they are saying, by the fact you are putting the application in the court and the court fixes the date, then thereafter you cannot go into the appeal against the return order. तो या तो आप अपनी एप्लीकेशन पे सुनवाई करके उस पर ऑर्डर करवा लो और या फिर अपील में चले जाओ. लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं चल सकते. इधर अपील भी डाल दिया और उधर एप्लीकेशन लगाकर डेट फिक्स करवाने का ऑर्डर भी कर दिया. तो अगर आपको अपील में जाना है तो फिर अपेलेट कोर्ट विल डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन. So that is what they are declaring here in this clause. फिर से पढ़ो इसको. Where the application made by the plaintiff under sub-rule 2 is allowed by the court. अगर disallowed हो गया तब तो आप अपील में जा सकते हो. अगर आपने एप्लीकेशन डाला 10A में and court did not allow the application, कोर्ट ने डेट फिक्स नहीं किया, then you can go in appeal. But if the court has allowed the application, means the court has fixed the date in the other court, then in that case you cannot go in appeal. Where the application made by the plaintiff under sub-rule 2 is allowed by the court, the plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint. Means once you have put the application, there are two possibilities. The court may allow the application and the court may not. And if the court allowed the application, then you cannot now go in the appeal against the return order. But if the court not allowed the application, then obviously you can go into the appeal against the return order. So is that fine? ठीक. अभी आपका जो थर्ड ऑप्शन है अपील, कैन बी इज टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन. तो फिर से देखो आप इसको. यहाँ पर आपका प्लेंट रिटर्न हो गया. कोर्ट either the suo motu or either on the objection of the defendant conducted a hearing and passed an order of return. So now you are having three options. Out of them, one option you are having, you yourself present it before the another court. आप प्लेंट ले लो और उसको आप खुद प्रेजेंट करो in the proper court. And another option you have got is that you make an application of 10A and get the date fixed into the other court. और अगर आपने ये एप्लीकेशन फाइल कर दिया और कोर्ट ने डेट फिक्स कर दिया है दूसरे कोर्ट में, तब आप अपील में नहीं जा सकते. लेकिन अगर आपने ये एप्लीकेशन फाइल नहीं किया था या फिर आपने एप्लीकेशन फाइल किया था लेकिन कोर्ट ने डेट फिक्स नहीं किया, एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया, तब भी आप अपील में जा सकते हो. दैट इज थर्ड ऑप्शन. सो द थर्ड ऑप्शन इज अपील. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अपील. अब व्हाट हैपेंस इज, आप गए हो अपील में अगेंस्ट द रिटर्न ऑर्डर, तो डिक्री तो है नहीं. इट इज ओनली द रिटर्न ऑर्डर. यू गो इनटू द अपील. सो द अपीलेट कोर्ट विल कंडक्ट द हियरिंग as to whether the trial court had jurisdiction or not. And if the court finds that the trial court does not have the jurisdiction, then the written order will be upheld by the appellate court. ठीक. तो appellate court ने भी अगर पाया कि trial court के पास jurisdiction नहीं है, so the written order will be upheld by the appellate court. But if it finds that the trial court had jurisdiction, then it will set aside the order of return. और अगर appellate court ने set aside कर दिया, then the case will be remanded back to the trial court
अगर आपका रिटर्न ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया देन द ट्रायल कोर्ट हैज़ टू कंडक्ट द ट्रायल। लेकिन अगर रिटर्न ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हुआ बल्कि अपहोल्ड हो गया देन व्हाट, देन द अपीलेट कोर्ट इज कंफर्मिंग द रिटर्न ऑर्डर, नाउ यू हैव टू गो टू द प्रॉपर कोर्ट। अब यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है कि अपीलेट कोर्ट में ही आप एप्लीकेशन लगा दो। अपीलेट कोर्ट ने जब रिटर्न ऑर्डर को अप्रूव कर दिया है तो आप अपीलेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दो दैट यू फिक्स माई डेट ऑफ हियरिंग in so and so court, and thereafter the appellate court will fix the date for appearance in that other court and serve a notice of the same to both the parties. So जैसे 10A में था वैसे 10B में हो जाएगा. So the appellate court can also fix the date of hearing to the other court. So take out 10B. So read 10B. Where on an appeal against an order for the return of plaint, where on an appeal against an order for the return of plaint, the court hearing the appeal confirms such order. Where on an appeal against an order for the return of plaint, the court hearing and the appeal confirms such order, the court of appeal may, if the plaintiff by an application so desires, while returning the plaint, direct plaintiff to file the plaint, subject to the provisions of the Limitation Act, in the court in which the suit should have been instituted. Means the proper court in which the suit should have been instituted, whether such court is within or without the state in which the court hearing the appeal is situated, and fix a date for appearance of the parties in the court in which the plaint is directed to be filed, and when the date is so fixed, it shall not be necessary for the court in which the plaint is filed to serve the defendant with the summons for appearance in the suit, unless that court in which the plaint is filed, for reasons to be recorded, otherwise directs. Then clause 2. The direction made by the court under Rule 1 shall be without any prejudice to the rights of the parties to question the jurisdiction of the court in which the plaint is filed to try the suit. Now what is the difference between this and 10A? अब इसमें और 10A में सब कुछ सेम है। अब देखो, अगर अपीलेट कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर को अगर कंफर्म कर दिया, इट मीन्स रिटर्न इज प्रॉपर, मीन्स ट्रायल कोर्ट डज नॉट हैव jurisdiction. अब you may take the plaint and file the suit in the proper court by yourself, or you make an application in the appellate court and requesting the appellate court that you fix the date in the proper court. अब यहाँ पर और 10A में फ़र्क ये है, यहाँ पर और 10A में फ़र्क ये है कि 10A में आप प्रॉपर कोर्ट खुद सजेस्ट करते हो कि दिस इज द कोर्ट विच वेयर आर यू वांट टू गो, जबकि 10B में सिंस इट इज सुपीरियर, इट इज द अपीलेट कोर्ट, so you may request the appellate court to suggest the court, and the appellate court itself can suggest the court and direct you to go in that court. So in 10B it is not provided that you fix the court. You मतलब party fixes the court. The party may request the appellate court to fix the court. जबकि 10A में the party himself decides that where he has to go. जबकि 10B में दोनों पॉसिबिलिटीज है। 10B में दोनों पॉसिबिलिटीज है, पार्टी खुद भी डिसाइड कर सकता है कि उसे कहाँ जाना है, और या फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है एंड कोर्ट में डायरेक्ट दैट द प्लेंट शुड बी टेकन टू सो एंड सो कोर्ट. सो दैट इज वन difference. That is one small difference, but very important difference. In 10A, the other court is looking by the party himself, and in 10B, the party himself can also fix the other court or may require the appellate court to fix, and the appellate court will direct you to appear in that court on so and so date. ठीक.
तो 10A में पार्टी खुद दूसरा वाला कोड डिसाइड करेगा और 10B में पार्टी खुद भी कर सकता है या अपलेट कोड से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप डिसाइड कर दो और अपलेट कोड डिसाइड करेगा कि आपको किस कोड में जाना है। अब if the party itself decide, then the applet court, they are not writing here it, but if the party himself decide, the applet court will not normally interfere formally, but the applet court, since it is senior court, so they are wise enough to tell the party that this is a wrong court. तो applet court suggestion दे सकता है that you will go in so and so court. Is that fine? अब ये जो लास्ट क्लाउज है, सेकंड क्लाउज है, अब ये कहता है द डायरेक्शन मेड बाय द कोर्ट अंडर सब रूल 1 shall be without any prejudice to the rights of the parties to question the jurisdiction of the court in which the plaint is filed to try the suit. अब मान लो अपलेट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि तुम इस कोर्ट में जाओ, वहां पर दोनों पार्टीज अपीयर हो गए। अब द क्वेश्चन इज कि कैन द डिफेंडेंट, वहां पर दोनों पार्टी अपीयर हो गए, उसके बाद कैन द डिफेंडेंट अगेन रेज द क्वेश्चन ऑन द jurisdiction दैट दिस कोर्ट डज नॉट हैव द jurisdiction. अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अपलेट कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, मतलब इज द डिफेंडेंट बाउंड बाय द फैक्ट दैट द अपलेट कोर्ट डायरेक्टेड टू द अदर कोर्ट, और कैन द डिफेंडेंट स्टिल रेज द ऑब्जेक्शन regarding the other court jurisdiction. अब मान लो this is the trial court, this is the appellate court. From the trial court you went to the appeal in the appellate court. अब appellate court में 10B में the appellate court directs that the party should appear before this court, any court. The appellate court declares that the party should appear in court number B, suppose. अब both plaintiff and defendant, they both make appearance. How can this defendant raise the objection on the jurisdiction of court B? Simply because the appellate court has directed them before court B, so that is not binding upon the parties. The parties can still raise the objection regarding the jurisdiction of that court. ठीक, एक बार फिर से पढ़ लो 10B आप. Where on an appeal against an order for the return of plaint. Where on an appeal against an order for the return of plaint. Appeal against an order for the return of plaint. Order 43, Rule 1A. Where on an appeal against an order for the return of plaint, the court hearing the appeal confirms such order. Confirms such order means confirms written order. Means it accepts the fact that the trial court does not have jurisdiction. The court of appeal may, if the plaintiff by an application so desires, while returning the plaint. If the plaintiff by an application so desires, means plaintiff can request the court. While returning the plaint, appellate court may direct the plaintiff to file the plaint subject to the provisions of Limitation Act. Direct the plaintiff to file the plaint subject to the provisions of Limitation Act in the court in which the suit should have been instituted, whether such court is within that state or without outside the state, outside that state, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It will direct the plaintiff and defendant to appear in that other court and fix a date for the appearance of the parties in the court in which the plaint is directed to be filed, and when the date is so fixed, it shall not be necessary for the court in which the plaint is filed to serve the defendant with the summons for appearance etc. Means जिस कोर्ट में डेट फिक्स किया गया है तो उस कोर्ट की ड्यूटी अब नहीं है, जैसे 10A में था, तो उस कोर्ट की ड्यूटी नहीं है कि आपको दोबारा सम्मन सर्व करे. चाहे तो सम्मन सर्व कर सकता है, चाहे तो ना करे, क्योंकि जो आपको नोटिस अपलेट कोर्ट ने दिया है
that will be deemed to be a summons by that court. Both the parties will have to appear in that other court. Both the parties will have to appear in that other court on the date fixed. There the question is, can the defendant raise an objection regarding the jurisdiction of the other court? Can the defendant raise an objection regarding the jurisdiction of the other court? The answer is yes. Simply because the appellate court has directed you, you are not bound by that order, and you can still raise the objection in that other court. ठीक? ओके, अब इसको एक बार डायग्रामेटिकली देख लो. Suppose the suit filed here, now the WS is filed here. WS में मान लो jurisdiction का objection उठाया, it is a preliminary objection. Now the court conducted the hearing, and here suppose the court passes the written order. अब written order में एक situation तो होगा, there is an endorsement in the written order plus the date of return and who presented plus reasons. अब उसके बाद the plaintiff may file himself, वो plaint वापस ले ले, and he may file the plaint himself to the proper court. So that is one possibility. And the second possibility is applied to the same court under order 7 rule 10A for the fixation of date. If this court fixes the date in the other court, and in that case no summons would be issued by the other court. No summons from the other court would be required. इस कोर्ट ने दूसरे कोर्ट का डेट फिक्स कर दिया, तो दूसरे कोर्ट के लिए ये जरूरी नहीं कि वो आपको सम्मन दे, क्योंकि you have been already been served a notice of such date by the present court. Present court ने जब आपको नोटिस दे दिया है, then no summons are required. So that is the second possibility. Now the third possibility is that you will go into the appeal against the written order. You will go into the appeal against the written order, और appeal में in appeal suppose the appellate court confirms the written order, then there you will put the application of, if you put the application of 10B, यहाँ पे भी वही होगा, the date in the other court will be fixed by the appellate court, और उधर भी इसी तरीके से no summons will be required to be issued by the other court because the appellate court already given the notice, and that notice work as summons to the parties. ठीक, अब लिमिटेशन का एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें. अब लिमिटेशन का सेक्शन 14 लगेगा यहाँ पर. अब 10B में लिखा है सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 और 10A इज नॉट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन. अब इसको डायग्रामेटिकली देखो. मान लो इस डेट पर आपका काउज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, और दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. अब आपने सूट इस डेट पर फाइल किया, बट इट इज इन अ रॉन्ग कोर्ट. जब सूट आपका यहाँ तक चला और इस डेट पर आपका सूट रिटर्न हो गया. अब सपोज यू हैव टेकन बैक द प्लेंट. अब देयर आफ्टर यू गो टू द प्रॉपर कोर्ट. जब मान लो इस डेट पर आपने प्रॉपर कोर्ट में फाइल कर दिया, आप लॉयर को कंसल्ट करोगे एंड सो फोर्थ, तो उसमें कुछ टाइम तो जाएगा. आपने इस डेट पर फाइल कर दिया. अब आपने जब इस डेट पर फाइल कर दिया, तो डिफेंडेंट इन दैट केस रेजेस द ऑब्जेक्शन. व्हाट ऑब्जेक्शन? That the suit is barred by the limitation because the prescribed period is lapsed. So there section 14 clause 1 clearly says of the limitation act that if the plaintiff is acting in the good faith and due diligence, then the period which he spent in the wrong court, in the court of wrong jurisdiction, then that period should be excluded. तो ये जो टाइम उसने लगाया था, जो रॉन्ग कोर्ट में उसने प्लेंट फाइल किया था, तो ये जो टाइम है, दिस पीरियड शुड बी एक्सक्लूडेड.
तो ये टाइम उसका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और ये जो टाइम है जिस दिन सूट फाइल हुआ था और प्रिस्क्राइब पीरियड के बीच का टाइम, ये वाला टाइम उसका इसके ऊपर ऐड कर दिया जाएगा जब रिटर्न हुआ था प्लेंट। तो अब उसका प्रिस्क्राइब पीरियड यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। तो ये जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, तो जो सेकंड सूट इज फाइल्ड हियर, तो ऑब्वियसली द सूट इज फाइल्ड इन विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक, तो ये ज़्यादा पूरा जब समझ में आएगा जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ोगे आप। लेकिन अगर आप गुड फेथ में या ड्यू डिलीजेंस में एक्ट नहीं कर रहे थे, देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। तो आप सेकंड सूट जब फाइल करोगे तो देन इट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन, देन द सूट विल नॉट बी अलाउड। So all that has been examined under section 14. तो अपलेट कोर्ट जो डेट फिक्स करेगा, या ट्रायल कोर्ट दूसरे कोर्ट में जो अपीयरेंस का डेट फिक्स करेगा, they will also keep in mind the period of limitation. Now suppose here the plaint was written in the trial court, the plaint was written, और उसके बाद suppose on the same day you went to the appeal. अब अपील में इतना टाइम लगा, confirm the written order, here somewhere appellate court confirm the written order, मतलब क्या, here also the court return the plaint। अब आपका मान लो कॉज ऑफ एक्शन इधर अराइज हुआ था और प्रिस्क्राइब पीरियड सपोज यहाँ पर है। अब सूट आपने इस डेट पे फाइल किया था, अब कितना पीरियड एक्सक्लूड होगा इसमें से, यहाँ पर प्लेंट रिटर्न हुआ अपील के बाद, हाउ मच पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड, द टाइम यू स्पेंट इन गुड फेथ इन द ट्रायल कोर्ट up to here, and also the time spent in the appellate court, suppose up to here, this whole time. So this entire period starting from this date to this date, ये पूरा पीरियड एक्सक्लूड होगा, और जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसके ऊपर इतना टाइम और ऐड हो जाएगा। तो मान लो रफली प्रिस्क्राइब पीरियड आपका यहाँ आ जाएगा। अब कोर्ट ऑफ रिटर्न, अपलेट कोर्ट जो डेट फिक्स करेगा दूसरे कोर्ट में, तो इट विल ऑल्सो कीप इन माइंड कि बहुत लंबा डेट फिक्स ना करे, देयरफॉर इट विल फिक्स अ डेट एज सून एज पॉसिबल सो दैट द प्रिस्क्राइब पीरियड वुड नॉट लैप्स। अब उस कोर्ट में हियरिंग कब होगी, दैट इज देयर डिस्क्रिशन। ठीक, अब सीधा रूल 12। In Rule 12 it is said, where a plaint is rejected, the judge shall record an order to that effect with the reasons for such order. तो order reasons होने चाहिए, order में reasons होने चाहिए means speaking order होना चाहिए। When the plaint is rejected, the order should be speaking. Rejection of plaint should be with a speaking order. And in Rule 13, they are saying the rejection of the plaint on any of the grounds herein before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। मतलब एक बार अगर plaint reject हो गया आपका, then you are not precluded from filing the fresh plaint, so you can always file a fresh plaint। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन it is always subject to the period of limitation। You can always present a fresh plaint, but it is always subject to the period of limitation। ठीक, so after that we have to go into the next topic, that is amendment of pleadings, but we would continue in the next lecture. That's it for this lecture. Thank you.